nasal cavity आपका आ जाता है pharynx और larynx आ जाता है, ठीक है. Respiratory system comprise the lungs and a sequence of airways leading to the external environment. This system provides oxygen and eliminating carbon dioxide. It's subdivided into conducting portions and respiratory portions. अच्छा ये एक पिक्चर है, इसमें respiratory portion और conducting portion के बारे में बताया है. ठीक है, देखिए conducting portion में आपका ट्रैकिया आ जाता है, मेन ब्रोंकस आ जाता है, सेगमेंटल ब्रोंकस आ जाता है और ब्रोंक्यूल्स भी आते हैं. जबकि रेस्पिरेटरी में आपका टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स आएंगे एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे. Basic structure of the respiratory system consists of 4 layers. बेटा मुझे थोड़ा क्लियर करें, आपको आवाज मेरी आ रही है? 4 main layers. The respiratory mucosa, that is consists of epithelium and supporting laminate propria. Second one is submucosa. Third is cartilage and muscle layer. Fourth is adventitia. The components of these layers in different regions of the respiratory system and are related to the functions of each component of the respiratory system. Nasal cavity is divided into two by the vertical nasal septum. On the side of each nasal cavity, there are 3 horizontal outgrowths called nasal concha, singular concha, and terminates. These terminates disrupt the airflows, directing air towards the olfactory epithelium on the surface of terminates and the septum. देखिए कंडक्टिंग पोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये है कंडक्टिंग पोर्शन जिसमें आपके ये ट्रैकिया, मेन ब्रोंकस वगैरह आपके शामिल होते हैं. इसके पार्ट्स में आपके पास नेजल कैविटी आ जाता है, नेजल फेरिंक्स आता है, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं आपके पास. ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है कि ये क्लीन करता है, वार्म एंड मॉइस्ट करता है एयर को prior to reaching the respiratory epithelium. The main function of the conducting system is to condition the inspired air. एयर किस तरह से कंडीशनड होगी? सबसे पहले वो humidified होगी by the serous and mucous secretions. Then it is warmed by the underlying blood vessels. And then third one is filtered by particles being trapped in mucous secretions and are transported towards the throat, where the mucus is swallowed. The upper region of the respiratory system and the nasal passage are converted with the respiratory mucosa, and in some region it's converted in the olfactory mucosa. देखिए ये आपका जो है nasal cavity है, पिक्चर में है, किस तरह से कंपोज्ड है. इसकी कंपोजिशन है कि 3 रीजन्स इसमें क्लियरली विजिबल है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रीजन. तो हर रीजन को हम आराम से अलग अलग करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन जो है आपका वेस्टिब्यूल है. ठीक है, ये है. और बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज nasal cavity, then say that nasal cavity is a large air-filled space, and it septum divides the nasal cavity into 2 cavities. Each cavity is a continuation of one of the 2 nostrils. The nasal cavity is the uppermost part of the respiratory system and provides the nasal passage for inhaled air from the nostrils to the nasal pharynx and rest of the respiratory tract. It is lined by stratified squamous and the respiratory tract, pseudo-stratified columnar epithelium. देखिए हर चीज की जो है ना, मैं आपको बार बता रही हूँ कि आप उसकी देखिए एपिथेलियम किससे उसकी कंपोजिशन है. तो आप ये देखिए नेजल कैविटी की जो कैविटी है वो लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट pseudo stratified columnar epithelium, separated by the transitional epithelium in some places. Respiratory mucosa, also called Schneiderian membrane, may contain goblet cells, may undergo squamous metaplasia. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नेजल कैविटी को हम हर रीजन के हिसाब से पढ़ेंगे. तो उसमें मैंने आपको 3 रीजन स्पेसिफिकली बताए थे कि वेस्टिब्यूल से आपका रेस्पिरेटरी रीजन है, ऑल्फैक्टरी रीजन है. तो सबसे पहले आपका वेस्टिब्यूल है. ये क्या है? What is this? Anterior portion of the nasal cavity near of the larynx, dilated and known as the vestibule. It is the first part of 1.5 centimeter of the conducting portion
falling nostrils, and it's lined with a keratinized stratified squamous epithelium. It is also lined with the skin and has a short stub hairs, membrane that prevents large dust particles to enter. Dermis houses numerous sebaceous glands. Vestibule is enclosed by the cartilage of the nose, and it's lined by some epithelium of the skin, like stratified squamous keratinized. Within the vestibule, this change into the typical respiratory epithelium that lines the rest of the nasal cavity and the respiratory tract. Inside the nostrils of the vestibule are the nasal hair, which filter dust and the other matter that are within. Second region is respiratory region. At the transition from the vestibule to the respiratory region of the nasal cavity, the epithelium becomes first stratified squamous and then pseudo-stratified columnar and ciliated. ठीक है, ट्रांजिशन जोन में ज़ाहिर है वो ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगी, लेकिन जब वो चेंज होगी रेस्पिरेटरी रीजन पे आप आएंगे तो वो सीधो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड सिलिएटेड हो जाएगी. This type of epithelium is characteristic for all the conducting passages dedicated to the respiratory system and therefore also called the respiratory epithelium. Mucus producing cochlear cells are present in the epithelium. The surface of the lateral part of the nasal cavity is thrown into folds by the body projections called the conchi. Conchi ये turbinates जो है वो located होते हैं इस region में. Turbinates have a very vascularized lamina propria, allowing venous plexus of the mucosa to engorge with blood, restricting airflow and causing air to be directed to the other side of the nose, which acts in concert by shrinking blood out of its turbinates. This cycle occurs approximately every 2.5 hours. ये जो folds हैं वो increase करते हैं nasal cavity की surface area को and creates करते हैं the turbulence in the stream of the passage air, both of which facilitates the conditioning. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसका काम conditioning करना है, like the warming, cooling, and filtration of the air. Mucus and sebaceous glands in the connective tissue underlying the epithelium, the lamina propria supplement of the secretion of the cochlear cells. Veins in the lamina propria form thin-walled cavernous sinusoids, also called cavernous bodies. Last one is the olfactory region. Tissues on the superior concha and the nasal septum form the olfactory region of the nasal cavity. Olfactory segment is lined with a specialized type of pseudo-stratified columnar epithelium known as olfactory epithelium, which contains receptors for the sense of the smell. Cilia in the epithelium of the olfactory region arise from olfactory cells. The cell membrane covering the surface of the cilia contains olfactory receptors, which is formed with the odor-producing substances, odorants, dissolved in the cirrus covering the epithelium. Olfactory mucosal cell types include bipolar neurons supporting sustentacular cells, basal cells, and Bowman's gland. The axon of the bipolar neurons form the olfactory nerve. Cranial nerve 1, which enters the brain through the cribriform plate. Bowman's gland are serous glands in the lamina propria whose secretions trap and dissolve odoriferous substances. देखिए ये पिक्चर है, इसमें क्लियर है सारा respiratory epithelium की बात में करता है, that is pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. इसमें mucus in the cochlear cells, cilia, lumen,
बेस में मेमब्रेन शो हो रही है, लैमिना प्रोपिया शो हो रहा है इसमें। फंक्शंस जो है इसके द टू नेजल कैविटीज की क्या फंक्शन होना चाहिए, शुरू में ही बता दिया कि कंडीशंस करता है कि condition the air to be received by the other areas of the respiratory tract. Owing to the large surface area provided by the nasal concha, also known as turbinates, the air passing through the nasal cavity is warmed and cooled within 1 degree of the body temperature. In addition, the air is humidified and dust and other particulate matter is removed by nasal hair in the nostrils. The entire mucosa of the nasal cavity is covered by a blanket of mucus, which lies superficial to the microscopic cilia and also filtered inside air. The cilia of the respiratory epithelium move the secretory mucus and particulate matter posteriorly towards the pharynx, where it passes into the esophagus and it is digested in the stomach. The nasal cavity also houses the sense of smell and contributes greatly to taste sensation through its posterior communication with the mouth through the concha. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए इसकी, ज़ाहिर आप सबको पता है इसकी एलर्जिक इसमें कंडीशंस आ जाती हैं, पॉलिप्स आ जाते हैं, कॉमन कोल्ड्स आ जाते हैं, और ज़ाहिर इसमें वायरल जो है वो डिजीज हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, नेजल कैविटी का ट्यूमर हो सकता है, बोथ बिनाइन एंड मच ऑफन मैलिग्नेंट। बिनाइन ज्यादा होता है, मैलिग्नेंट थोड़ा रेयर उसमें होता है। as well as इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है नेजल म्यूकोसा की। many problems can affect the nose। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं नेजल कैविटी में कौन कौन सी हो सकती है, तो आप उसको सिस्टमेटिकली आप बताएं कि इसमें ज़ाहिर वायरल भी इंक्लूड है, बैक्टीरियल भी है और फंगल भी, तीनों किस्म के आपके इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फिर अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं नेजल कैविटी, डेविएटेड सेप्टम, यानी सेप्टम वो डेविएटेड होता है, अपनी जगह से हटा हुआ होता है। अब आप जब क्लिनिकल सेटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स एएनटी के वार्ड में स्पेशली आप देखेंगे पेशेंट्स आते हैं डेविएटेड सेप्टम्स के साथ, कि उनकी शिफ्टिंग हुई होती है वॉल की, जो कि नेजल कैविटी को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, और जिसके नतीजे में आपको नोज की साइड है वो स्ट्रेट नजर नहीं आएगी, थोड़ी सी डेविएटेड से नजर आएगी। फिर आप बात करते हैं पॉलिप्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्यूबर्स भी ग्रो करते हैं, लाइक बिनाइन, ठीक है, और मच वेयर जो है वो मैलिग्नेंट हो सकता है। सॉफ्ट ग्रोथ होती है, डेवलप दैट लाइनिंग नोज एंड साइनसेस। नोज ब्लीड्स हो सकता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड द एपिस्टैक्सिस, ठीक है, इट्स नॉट द डिजीज बट इट्स द मैनिफेस्टेशंस ऑफ मेनी डिजीज, ठीक है। राइनाइटिस बहुत कॉमन है, इन्फ्लेमेशन है नोज की, ठीक है, राइनाइटिस ITES से बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन होगी, एंड साइनसिस की इन्फ्लेमेशन वेरी कॉमन, ठीक है, समटाइम कॉज बाय एलर्जी से कॉमन हो सकती है, और सिम्टम्स वही है, रनिंग नोज है, ठीक है, और ज़ाहिर आप स्नीजिंग है, इस सिम्टम्स होती हैं। नेजल फ्रैक्चर्स हो सकता है जिससे कि ब्लॉकिंग नोज, ठीक है, कॉमन कोल्ड एंड साइनो नेजल ट्यूमर्स, ये इसकी क्लिनिकल पैथोलॉजी है। अच्छा, नंबर 2 जो है हमारा है पैरिंक्स, ठीक है, नेजल कैविटी के बाद मुझे टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें नेजल कैविटी पढ़ाना था आपको, पैरिंक्स और लैरिंक्स। पैरिंक्स क्या है, पैरिंक्स में पैरालिसिस आ जाते हैं प्लूरल में, इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड द नेजल कैविटी, ठीक है, एंड ऑफ द एसोफेगस एंड लैरिंक्स। The human pharynx is conventionally divided into 3 sections: the nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. It is also important in vocalization. देखिए, ज़ाहिर है अगर मैं आपसे पूछूं कितने पार्ट्स हैं तो आपको आने चाहिए। कौन कौन से पार्ट्स मैंने आपको बताया, nasopharynx है,
Laryngopharynx है, oropharynx है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से कंपोज्ड है, कंपोजिशन किस तरह से इसकी, is lined by both stratified squamous epithelium and ciliated pseudo-stratified epithelium with goblet cells. Region of the pharynx that are likely to be roughened up by the foods are lined by stratified squamous epithelium. The epithelium of the pharyngeal portion of the conducting zone changes with respect to each pharyngeal segment. In the nasopharynx, the epithelium is continuous with that of the nasal cavity. Okay? In oro and laryngopharynx, epithelium transitions to non-keratinized stratified squamous epithelium. Additionally, lymphatic aggregates distributed throughout the mucosa act as first contact point for the immune system to sort through the particles entering the body. Nasopharynx. Nasopharynx जो है, जैसे अभी भी हम nasopharynx के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। अपर पोर्शन जो है pharynx का वो nasopharynx है, extend from the base of the skull to the upper surface of the soft palate. It includes the space between the internal narines and the soft palate and lies above the oral cavity. The adenoids, also known as pharyngeal tonsils, are lymphoid tissue structures located in the posterior wall of the narrow nasopharynx. ठीक है, pharyngeal tonsils की लोकेशन बताई है इन्होंने. Valgus, the tonsillar ring, is an annular arrangement of the lymphoid tissue, और ये located होते हैं in both the nasopharynx and oropharynx. The nasopharynx is lined by the respiratory epithelium. बार बार बता रही हूँ कि वो epithelium आपकी होगी pseudo-stratified columnar and ciliated. Polyps या mucus can obstruct the nasopharynx as can congestions due to an upper respiratory infection. The auditory tube which connects the middle ear to the pharynx opens in the nasopharynx at the pharyngeal opening of the auditory tube. The opening and closing of the auditory tube serves to equalize the barometric pressure in the middle ear with that of the ambient atmosphere. अच्छा, इसमें nasopharynx में हम ज़्यादा भी पढ़ रहे थे, तो इसमें 5 openings होते हैं इसकी wall पे, 2 internal narines, 2 openings that lead in the auditory tube, and 1 opening in the oropharynx. Posterior walls also contain pharyngeal tonsils. After second part जो है after nasopharynx is oropharynx, is the oral part of the pharynx that lies behind the mouth. It is standing from below the level of soft palate. The level of the upper part of the body of 3 their cervical vertebra. Laryngopharynx. It is the laryngeal part of the pharynx. It extends from the oropharynx above and continues as the esophagus below with the larynx lying anteriorly. It is also both the It is also both the respiratory and digestion and function. It is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. आप just 1 minute wait करेंगे जरा पानी. जी. Functions क्या हैं pharynx के? It's the passageway for air and food, warming and humidifying hair.
लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लैरिंक्स. लैरिंक्स क्या है? इज अ होलो tubular structure at the upper end of the trachea formed by irregularly shaped plates of the hyaline and elastic cartilage. Structure इसका किस तरह से है कि mucosa forms two pair of folds and two vocal cords which extend in the region of the larynx. The laryngeal epithelium corresponding to the mechanically exposed areas consist of stratified squamous non-keratinized epithelium. Basally in this epithelium, dendritic antigen-presenting Langerhans cells can be found. In the rest of the larynx, epithelium is ciliated columnar, pseudo-stratified, with a rich population of goblet cells, except in the true vocal cords. Hemiapropria consists of rather loose connective tissue and contains groups of small branch tubulo-alveolar glands. There are several cartilaginous parts inside its lamina propria. The large cartilage are the hyaline cartilage, the small cartilage are the elastic, and the epiglottis has a lingual and a laryngeal surface. The lingual surface is covered with stratified squamous epithelium. Towards the base of the epiglottis, the epithelium gradually changes in the pseudo-stratified columnar ciliated on the laryngeal surface. अच्छा देखिए, एपिग्लॉटिस मैंने आपको बताया था यहाँ पे लार्ज कार्टिलेज जो होगा वो हाइलाइन होगा, स्मॉल जो है आपका जो लार्ज आपका कार्टिलेज वो हाइलाइन है, स्मॉल जो है आपका इलास्टिक है. एंड ठीक है, तो अब हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, सॉरी थायराइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे. इट इज मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, lies in front of the neck. Its anterior wall projects into soft tissue in front of the thyroid, forming Adam's apple. Ligaments that connects the thyroid cartilage to hyoid bone is called thyrohyoid membrane. Upper part of the cartilage is lined with stratified squamous epithelium. Lower part is lined with facilitated columnar epithelium. Cricoid cartilage. Cricoid cartilage is a ring of hyaline cartilage that forms the inferior wall of the larynx. ठीक है, attached to the first ring of the cartilage of the trachea by cricotracheal ligaments or membrane. Thyroid cartilage is connected to cricoid cartilage by cricothyroid membrane or ligaments. This cartilage is lined with ciliated columnar epithelium. Arytenoid cartilage, ये triangular pieces हैं, mostly hyaline cartilage से ही बनते हैं, and located at the posterior superior border of the cricoid cartilage. They give attachment to the vocal cords, to the muscle, and are lined with the ciliated columnar epithelium. Epiglottis. It is large leaf-shaped piece of the elastic cartilage. अच्छा ये देखें, अभी तक हमने सबका हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, जिसमें थायराइड आ जाता है आपका. ठीक है, और आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज आ रहा है, आर्टिनाइड कार्टिलेज, ये सब हाइलाइन है. अब एपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, दैट इज कवर्ड विद एपिथेलियम. इट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड ऑलमोस्ट anteriorly covered by the transverse mucosa. It extends from the posterior aspect of the term to its anchoring point and the anterior limb of the thyroid cartilage. Glottis consists of pair of folds of the mucous membrane
The vocal cord in the larynx and space between them is called remaglottis. Interior of the larynx. Vocal cords are the two pale folds of the mucous membrane. When the muscles controlling the vocal cords are relaxed, the muscle controlling the vocal cords are relaxed, the vocal cords open and passageway for air coming up to the larynx is clear. Vocal cords are said to be abducted, often low-pitched sounds produced. When the muscles controlling vocal cords contract, vocal cords are stretched to its extent and are vibrated by the air passing through the lungs. That is high-pitched sound produced. और यहाँ पे क्या होगा? Abducted means close होगा. Functions क्या है larynx के? Production of the sound, speech, humidifying, filtering, warming, and passageway for air. अच्छा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारा फिनिश्ड हो गया ऑलमोस्ट. अब मुझे ये बताएं, बिल्कुल एंड में आते हैं आप लोग. एंड में आने का मकसद क्या है? या तो ज्वाइन